Interpretation of Avogadros number. Avogadros number की बहुत significance है. It helps us determine the various particles in a given quantity. किस तरह की interpretations की जा सकती हैं? Let's have a look. It can help us determine total number of ions, atoms or a molecule in a given quantity of a substance, number of positive and negative charges, like अगर हमने किसी एक substance की hydrolysis की है, तो we want to know that how many charged particles, negative and positive ions are produced, and so as the total masses of the constituent elements can also be determined if we have Avogadros number provision. यहाँ बात करते हैं water की. Let's suppose I have 1 mole of water. What Avogadros number suggests? 1 mole of water contains how many molecules, which is 6.02 into 10 raised to power 23 Avogadros number, and at standard temperature and pressure, and so as how many atoms, constituent atoms की बात करें तो जैसा कि formula में है H2O, so 2 atoms or 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. So there are 2 into 6.02 into 10 raised to power 23, 2 times the Avogadros number of hydrogen atoms, and Avogadros number of oxygen atoms are there in 1 mole of water. H2SO4, sulfuric acid. Sulfuric acid की बात करें तो sulfuric acid के molecule में there are two hydrogen atoms. 2 hydrogen atoms हैं, तो इनकी quantity अगर define करनी हो in terms of Avogadros number, so I'll say 2 times the Avogadros number are there, the quantity of hydrogen atoms in 1 mole of sulfuric acid. Sulfur का एक ही atom है in the structure of H2SO4, तो अगर हमारे पास 1 mole quantity है sulfuric acid की, तो उसमें number of sulfur atoms will be equal to Avogadros number. और oxygen atom, 4 oxygen atoms हैं, और 4 into Avogadros number, 4 times Avogadros number will give us the total number of oxygen atoms in 1 mole of sulfuric acid. These are certain interpretations. It helps us not only determine the number of molecules of a given substance, rather it also gives us the provision that we can also determine atoms, constituent atoms की quantity भी determine कर सकते हैं. Ionization sulfuric acid की हमने constituent particles की बात की है. अब if I have done the ionization, मैंने hydrolysis कराया है या ionization की है sulfuric acid की, तो it will give me the ionic species will be hydrogen H positive ion and SO4 2 negative ion. So I want to know that how many quantities of these ions has been produced. If I am dealing with 1 mole of H2SO4, I can simply say that 2 moles of H positive ion and 1 mole of sulfate ion has been produced. But what if the quantities are changed? What if there are only 9.8 grams, it means 0.1 mole of H2SO4 are given. 9.8, एक mole में 98 grams होते हैं. 9.8 grams suggest there are 0.1 moles of H2SO4 we are dealing with. So I want to know that how many atoms or how many ions, H positive ions are there in 0.1 mole of sulfuric acid. So I'll simply say, as the balanced chemical equation suggests, 2 H positive ions बने हैं. So I'll simply multiply. So 6.02 into 10 raised to power 23. जैसा कि this balanced chemical equation was for 1 mole, but now the quantities are changed. We are dealing with 0.1 moles. So if the reactant or the product on the left hand side was 0.1 mole, तो इससे हमें 0.2 moles of H positive ions मिले हैं, and so as इसमें हमें 0.1 mole SO4 मिला है. Number of H positive ions can be determined 0.2 as from the balanced chemical equation into, मतलब number of moles को multiply कर दें Avogadros number से. हमारे पास कितने number of moles हैं H positive ion के after hydrolysis of H2SO4? 0.2. Number of sulfate ions 0.1 into Avogadros number give us the total number of sulfate ions after the ionization of sulfuric acid.
दूसरी इंटरप्रिटेशन थी टोटल नंबर ऑफ, जैसा कि आयोनिक स्पीशीज के साथ हमने डील किया है, तो आई वांट टू नो दैट पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस बने हैं उनकी कितनी क्वांटिटी है। पहले हमने सिंपली बात की थी H पॉजिटिव आयंस की, और अब मैं चार्जेस के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। आई डोंट नॉट वांट टू नो दैट इट वाज H पॉजिटिव आयन और SO4 टू नेगेटिव आयन। आई जस्ट सिंपली वांट टू से कि कितना पॉजिटिव चार्ज बना है और कितना नेगेटिव चार्ज बना है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जैसा कि 2 मोल्स बने थे, तो हम लोग 0.1 मोल से डील कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन आई विल रिकॉल यू फॉर दिस। 0.2 will be the quantity produced of positive ions. 0.2 moles positive ions बने हैं, और अगर इन मोल क्वांटिटी को मैं Avogadro numbers से मल्टीप्लाई कर दूं, then what will I get? The total number of positive charges in the given compound. So I want to know the total number of negative charges. Negative charges, sulfate negative ion है. Here I have multiplied 0.2 with 6.2 with Avogadro's number. You will say that if I can see here 0.1 यानी कि सिंगल हमारे पास नेगेटिव आयन बना है, तो why I am multiplying 0.2? लेकिन अगर आप चार्ज क्वांटिटी देखें सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन इज 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव सिंपल यूनी पॉजिटिव आयन था। यहाँ पे हमारे पास एनाइन जो है दैट इज 2 नेगेटिव, तो हमारे पास 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। 0.2, the number of moles of the negative charge will be multiplied with the Avogadro's number to get the total number of negatively charged particles in the ionized product. So as the third interpretation, that I want to know that how much mass of H positive ion or how much mass of sulfate ion has been produced. I just need to know that 1 mole में कितना होता है? 1 mole of H positive ion is equals to 1.008 grams. So as I can know कि अगर हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर 9.8 grams of sulfuric acid suggests that I end up with 0.2 moles of H positive ion. So I'll simply 0.2 moles, ये यूनिट मेथड लगाया गया है कि अगर एक मोल H पॉजिटिव आयन का मास 1.008 ग्राम्स है, तो 0.2 मोल्स में कितना होगा? सिंपली राइट इट विल बी ओके 0.2 into 0.2 into 1 it's molecular mass. इसका जो फॉर्मूला मास है 1.008, इसको मल्टीप्लाई कर दें, you will get the total mass of H positive ions produced in this reaction. Follow this interpretation and you can measure the mass of sulfate ion as well.